come in line with your celebration and start the program. Thanking of the camp. नहीं सर, खाली फ्लावर्स रखने गया रोज। चलो है ना कारण हो अटका होता मैं गुलाब सजा दूँ। A very good morning to one and all present over here and the viewers on the Facebook Live. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा मानव शरीर 5 तत्वों से बनाया हुआ है: अग्नि, वायु, मिट्टी, जल और शून्य। हमें ऊपर वाले ने 5 सेंसर बख्शा गया है: विजन, स्मेल, टेस्ट, हियर एंड टच। बचपन में मुझे पंचायत में मम्मी पिलाती थी तो यही कहते थे, आपको 5 उंगलियों से बख्शा गया है हर हाथ में और पाँव में, और ये जब 5 उंगलियां एक साथ होती है तो मुट्ठी बन जाती है। यानी इस 5 नंबर का बहुत जुड़ाव है हमारे साथ। और आज का अगर डेट भी देखा जाए, इट्स 5 सितंबर, राइट। और जब ये दिन हमें याद आता है हमारे बेस्ट फेज ऑफ लाइफ, दैट इज स्कूल लाइफ, जहाँ पे नेशनल एंथम गाया जाता था, जनगण मन, लेकिन हमारे लिए एक नेशनल एंथम जैसा ही एक एंथम होता था, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर। और यहीं पे हमारे शिक्षक हमें टोकते थे, बेटा इस तरह से नहीं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ये कहा जाता है। ये शिष्टता हमें शिक्षक सिखाते हैं हमारे लाइफ में, राइट। अब ये हमारा 5वां फेसबुक लाइव शो, देखो 5th नंबर। अब 5वां कैसे मैं गिनाता हूँ। हमने भाई बहन का प्यार का त्यौहार मनाया, उसके बाद हमने कृष्ण जन्मोत्सव मनाया, उसके बाद हमने देश की आज़ादी का पर्व मनाया, फिर हमने विघ्नहर्ता का महोत्सव मनाया, और आज हम 5 सितंबर के दिन 5वां फेसबुक लाइव शो कर रहे हैं, जिनका टाइटल है थैंक यू फॉर टीचर्स। अब आप में से कोई एडवोकेट है, कोई बिजनेसमैन है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, लेकिन ए फॉर एडवोकेट से पहले आपने ए फॉर एप्पल सीखा, बी फॉर बिजनेसमैन से पहले आपने बी फॉर बॉल सीखा, सी फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट से पहले आपने सी फॉर कैट, डी फॉर डॉक्टर से पहले डी फॉर डॉग, ई फॉर इंजीनियर से पहले ई फॉर एलिफेंट सीखा। ये सब हमें उस फाउंडेशन से सीखने को मिला जहाँ पे हमने पहला कदम रखा, दैट इज कॉल्ड द प्री प्राइमरी सेक्शन। जैसे कि आप देखते हैं, हम हमेशा एक पेड़ को देखते हैं, राइट, लेकिन वो पेड़ से पहले एक पौधा होता है और पौधे से पहले वो एक बीज होता है। अगर वो बीज को अच्छी तरह से नरिश किया जाए तो बेहतरीन पौधा बनता है और बेहतरीन पेड़ बनता है। इसी बीज को हमारे ट्रस्टी सर ने, महेंद्र सर ने एक बेहतरीन हाथों में दिया है, और वो बहुत अच्छी तरह से नरिश करती है उस चीज को, उस बीज को। और उनके नाम का अर्थ है गौरी माता, वी कैन कॉल दैट मदर ऑफ ऑल। और जैसे हमारे ट्रस्टी मैम हमेशा कहते हैं कि आप जिस सेक्शन में हो वहाँ पे यू हैव टू बी अ रोल मॉडल एज अ मदर फॉर ऑल। और बखूबी वो अपना कार्य निभाती है। एंड आपने देखा हर लाइव शो में वो हमेशा लाइवनेस लाती है। शी इज नन अदर देन आवर प्री सेक्शन प्रिंसिपल मिस शिवानी महिला। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैम, आप आके शो का शुरुआत कीजिए।
Good morning, all my dear viewers first, all my dear parents, students, all the teachers, principals, trustee sir, trustee ma'am who are present here. A very, very, very happy Teachers Day to all the teachers all over the world who are present. So, as you know कि हर लाइव में मैं आती हूँ, कोई प्रोवर्ब, कोई क्वोट, कोई शायरी से शुरुआत करती हूँ, बातें करती हूँ आपके साथ, बिकॉज आप हमें सपोर्ट देते हैं. जैसे कि साजिद सर ने कहा कि दिस इज अवर 5th लाइव ऑन 5th सितंबर 2020. 2020 इज अ सेलिब्रेशन टाइम बिकॉज हमने सारे लाइव सेलिब्रेशन आप ही के साथ किए हैं. अब तक टीचर्स डे हम हर साल सेलिब्रेट करते थे बट स्टूडेंट्स के साथ इन द स्कूल. Presently due to the situation, pandemic situation, students are not in the school, but इस बार भी हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है टीचर्स डे में. अब आप सोचेंगे कैसे? Yes, the question is how. So, आपने देखा कि लाइव वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स से हमारे टीचर्स अभी पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन में. वैसे ही उसी तरह हमारी इमेजियंस ने, हमारी इमेज के स्टूडेंट्स ने लाइव लेक्चर्स दिए हैं. एंड आज जितने भी प्री सेक्शन नर्सरी से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक जितने भी वीडियोस जाएंगे वो हमारे स्टूडेंट्स के जाएंगे. So they are not going to miss Teachers Day. And second thing, this time parents are also getting the opportunity to watch their child live. इस बार आप भी देखेंगे कि आपके बच्चे as a teacher जब हर साल स्कूल में आकर पढ़ाते हैं तो उन्हें कैसा लगता है, how they look live, because you are going to watch them on the app in the live video lectures. And we are going to celebrate this occasion with you all viewers, all the parents, all the members of staff जो past में थे, जो present में है, because we have taken the technological method that is Facebook Live. Thank you all my dear parents, students and all my staff members for always supporting us and motivating us to give you better. So this is our live and as I always say we get good viewers and likes. हम हमेशा से कहते आए हैं, मैं हर लाइव में आपको कहती हूँ कि लास्ट लाइव में मेरे इतने लाइक्स थे, इतने व्यूअर्स थे. अभी तक का रिकॉर्ड है कि 2500 से 3500 के बीच ही हमें व्यूअर्स मिले हैं. बट दिस टाइम आई वांट कि नेक्स्ट 5th सितंबर का जो लाइव होगा उसके मोर देन 5000 व्यूअर्स होने चाहिए. एंड दैट प्रॉमिस शुड बी फ्रॉम माय डियर ऑल द व्यूअर्स एंड पेरेंट्स. Again a very very good morning and happy Teachers Day to you all. So if I talk about myself, I am the part of Image English School. I am the principal of pre-primary section, that is Image Tender Touch. All my Imagians, thank you very much for giving us always love and support. Thank you so much all dear trustees, my dear trustee sir, respected Mahindra sir, who is the best guide for us, who is always guiding us like a father. Dear trustee ma'am, Pragna ma'am, who is always taking care of us like a mother. Dear principal ma'am, Preeti ma'am and Birju ma'am, who is always giving support and care in each and every occasion, either it is educational or cultural event. So all my dear parents, आज अगर मैं बात करूं तो आज टीचर्स डे है. आप सभी हमें सुनने के लिए उत्सुक है, हमें देखने के लिए उत्सुक है. बट डू यू नो व्हाट इज द फ्लो ऑफ टुडेज इवेंट? जन्माष्टमी में आपको पता था हम लाइव हांडी सेलिब्रेशन करने वाले हैं. गणेश महोत्सव में आपको पता था हम महाआरती करने वाले हैं. बट क्या आपको पता है कि आज टीचर्स डे? आपके बच्चों के लेक्चर्स ऐप पर अपलोड हो चुके हैं. वो आज टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप ऐप पर देख पाएंगे. बट आज इस लाइव में क्या होगा? हाँ, ये क्वेश्चन होगा ना सभी का, दैट व्हाट यू आर गोइंग टू वॉच, क्या देखने वाले हैं हम क्या आपको लाइव सेलिब्रेशन में दिखाने वाले हैं. सो इट्स अ सरप्राइज सरप्राइज एंड सरप्राइज लाइक एवरी इवेंट, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज दैट सरप्राइज. मैं अभी वो सरप्राइज आपको नहीं बताऊंगी. एज अ टीचर इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, इफ एज अ प्रिंसिपल आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, ईच एंड एवरी डे आई एम मीटिंग लॉट ऑफ पेरेंट्स, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अलग अलग बच्चे, अलग अलग पेरेंट्स से हम जब रोज मिलते हैं, डील करते हैं. आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई केम इन इमेज स्कूल फॉर द इंटरव्यू सेशन, our trustee sir told me that madam હવે તમારા જીવનમાં એક બહુ મોટો વળાંક આવશે. તમે રોજે અલગ અલગ વિદ્યાર્થીઓ, અલગ અલગ વાલીઓથી મળશો. તમારે એમના પ્રશ્નોનો ઉકેલ આપવો પડશે. તમારે એમને પ્રેમ ભાવથી એક માતાની દ્રષ્ટિએ એમની સાથે રહેવું પડશે. અને એવી જ રીતે उसी तरह से जब एस साजिद सर टोल, अगर हम बेस्ट मेमोरीज की लाइफ की बात करें तो स्कूल आता है.
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा कि अगर आपको मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो इस डे को टीचर्स को डेडिकेट करो। व्हाई ओनली द टीचर्स? क्यों उन्होंने शिक्षक दिन ही मनाने की बात की? व्हाई? क्यों शिक्षक इतना इम्पोर्टेंट है? हर व्यक्ति का क्वेश्चन होता है और हर व्यक्ति अपनी स्पीच में ये कहते हैं कि टीचर कैसे होते हैं, what is the importance of teachers in our life। बट मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था when I was in my college life कि एक टीचर की एज क्या होनी चाहिए? यस, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए? एज के अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक चेंज होते हैं। तो मैं बच्चों के उस क्वेश्चन का उकेल निकालना चाहूँगी। When I was very small and I was in the school, I was watching Teachers Day celebration। At that time I was thinking कि मैं भी बड़ी होकर टीचर बनूँ। But when I came into higher standard, जब सेकेंडरी एजुकेशन में 8, 9, 10 जब मेरा आया तब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे प्रिंसिपल बनना है। It's a fact। I was thinking कि मुझे प्रिंसिपल बनना है because my role model was my principal। Yes, she was Miss Noreen ma'am। She taught me that as a girl, ગુજરાતમાં જ્યારે આપણે રહીએ છીએ તો ગર્લ્સ એજ્યુકેશનની વાત કરું તો અમારી ઇમેજ સ્કૂલમાં પણ અમારા ટ્રસ્ટી સર અને મેડમ હંમેશા गर्ल्स एजुकेशन ने ऑलवेज मोटिवेट करे छे। बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगी, लास्ट ईयर हमने सभी गर्ल्स एडमिशन को फ्री स्टेशनरी किट्स और बुक का सेट दिया था। ईच एंड एवरी अगस्त तक जितनी भी बच्चियों ने एडमिशन लिया हमने उन्हें स्टेशनरी बुक का पूरा प्रोडक्ट एंड बुक्स प्रोवाइड किए बिकॉज वी आर ऑलवेज मोटिवेटिंग द गर्ल्स एजुकेशन। इन द सेम वे शी टॉट मी that if you are a girl, it's a big responsibility for you, Shivani. You have to be bold, you have to be educated, and you have to be the support system of your family because you're the eldest daughter. She taught me that what I am. When I jumped up into the diploma education, जब मैंने डिप्लोमा किया मुझे बचपन में तो यही लगता था कि स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वही हमारे टीचर होते हैं, वही हमारे रोल मॉडल होते हैं, वही हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। But no, that was not just that much truth. When I jumped into the diploma education and I went to Government Girls Polytechnic, I met my professors over there. तब ना हमारे HOD थे, head of the department. She was I think 60 years plus, and I thought she is the head and she is the principal, she is the main person. पर ऐसा नहीं था। मेरे जो लेक्चरर्स थे, मेरे जो प्रोफेसर्स थे, उनका भी टीचिंग, उनका भी गाइडेंस उतना ही इम्पोर्टेंट था हमारे लिए जितना हमारे HOD और जितना हमारे प्रिंसिपल का था। दैट मीन्स आपके जीवन में जब भी स्टेज बदलता है आपके टीचर्स, आपके रोल मॉडल्स बढ़ते हैं, कम नहीं होते। स्कूल गिव्स यू बेस्ट टीचर्स, colleges gives you best professors, and they all are important in your life. They teach you something. What is a guru? ગુ મતલબ અંધકાર और રૂ મતલબ પ્રકાશ। અંધકારથી પ્રકાશ તરફ લઈ જનાર વ્યક્તિ ગુરુ છે, ટીચર છે, જે તમને જ્ઞાન આપે છે, પ્રેમ આપે છે, જે તમને जीवन जीवानी शैली सिखवाड़े છે। नॉट ओनली पुस्तकी ज्ञान, आपको एजुकेशन तो वो देते ही हैं, बट आपका सर्वांगी विकास भी उनकी ही जिम्मेदारी है। द ओवरऑल डेवलपमेंट, लास्ट लाइव में प्रीति मैम ने कहा था कि कल्चरल एक्टिविटीज आर ऑल्सो दैट मच इम्पॉर्टेंट। सो इमेज इज ऑलवेज सेलिब्रेटिंग ईच एंड एवरी इवेंट with parents and students। so बच्चों का सर्वांगी विकास हो, all over education के साथ डेवलपमेंट हो। in the same way I have been into my life and मेरी लाइफ में भी उतने ही इम्पोर्टेंट मेरे टीचर्स रहे हैं, मेरे लेक्चरर्स रहे हैं, स्पेशली माय शिवांगी मैम एंड लिपि मैम who are watching today in live। thank you my all the dear teachers, my professors who have been into my life, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मोटिवेट किया और मुझे बताया कि which are the skills in you, because a teacher is the person after your parents who always supports you for your all the skills, who always accepts you with your negativity and positivity। so this is the best day and your teacher is the best role model of your life। thank you for giving us this opportunity, all my dear children and parents। thank you for keeping your faith in us that we will provide a best and better to your students। so let us start this live event। you know what is the title of this event? thank you teachers। yes, thank you teachers because you are the one who always support your students like your own child। so thank you dear all the teachers। and the live event is not up to this, बहुत सारी सरप्राइजेस आपको धीरे धीरे मैं बताती जाऊंगी। सबसे पहले भगवान का नाम लेना बहुत ही अनिवार्य है।
सो जैसे एक शिक्षक आपके जीवन में ज्ञान की ज्योति प्रगटाता है, वैसे ही दीप प्रागट्य के साथ हम शुरुआत करेंगे आज के थैंक यू टीचर्स डे लाइव सेलिब्रेशन की। सो आई वुड रिक्वेस्ट रिस्पेक्टेड ट्रस्टी सर महेंद्र सर, रिस्पेक्टेड ट्रस्टी मैम प्रज्ञा मैम, respected trustee sir to Yogesh sir, respected principal ma'am Preeti ma'am and Birju ma'am to come forward and lamp the light. Thank you so much. जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। भटका हुआ मेरा मन था कोई मिल ना रहा था सहारा, लहरों से लड़ती हुई राम, लहरों से लड़ती हुई राम को जैसे मिलना रहा हो किनारा, मिलना रहा हो किनारा। उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। शीतल बनी आग चंदन के जैसे राघव कृपा हो तुम्हारी, राघव कृपा हो तुम्हारी। उजियारी पूनम की हो जाए रातें, उजियारी पूनम की हो जाए रातें, ज्योति अमावस अंधेरी, ज्योति अमावस अंधेरी। युग युग से प्यासी मरुभूमि में जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो उस पर कदम मैं बढ़ाऊं, फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में, फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। Thank you, dear Manorama ma'am and Gaurav ma'am for the beautiful prayer. So दीप प्रागट्य के साथ अब हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे लाइव सेलिब्रेशन की। इमेज इंग्लिश स्कूल की अगर मैं बात करूं तो इट इज आई वर्ड ग्रुप છે જ્યાં ઘણા બધા બાળકો પોતાનું એજ્યુકેશન કમ્પ્લીટ કરીને આજે બહુ જ સારી પોઝિશનમાં ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં કામ કરી રહ્યા છે। जैसे कि मैंने बात की कि लाइव लेक्चर्स आज स्टूडेंट्स ने लिए हैं, तो जैसे उनके टीचर्स लाइव लेक्चर्स के लिए अलग अलग पेरिफेरल्स का यूज़ करते हैं, वैसे ही उन्होंने भी एक्स रिकॉर्डर, स्क्रीन रिकॉर्डर, यूट्यूब लिंक पर वर्कआउट किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू क्लैप फॉर दोज ऑल स्टूडेंट्स हु हैव वर्क टुडे हार्ड। एंड હવે હું વાત કરવા માંગીશ કે આજે ફર્સ્ટ જે આપણી ઇવેન્ટ છે, हम जो फर्स्ट इवेंट हमारा जो है वो क्या है। मैं दो उन शख्स के बारे में बात करना चाहती हूँ आज जो इमेज इंग्लिश स्कूल के पायनियर्स हैं। एंड अगर इमेज इंग्लिश स्कूल के बारे में मैं आपको बताऊँ, ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, 2002 was the day, 2002 was the year when Image English School was started with 600 students, जिसमें 6 sections तो प्री प्राइमरी सेक्शन थे। And today in 2020
we have more than 2,500 students with morning shift and noon shift with A division plus B division, that means two divisions. We have AC and AV classes in our premises. That's a big achievement for us. That the institute which started with 600 students is having more than 2,500 students today. That means कितने बच्चे 2002 से लेकर 2020 तक इमेज के premises में अपना education complete कर चुके हैं. So first of all, I would like to introduce you with a personality who is a father of Image परिवार. मैं हमेशा कहती हूँ कि इमेज इंस्टीट्यूट, इमेज इंग्लिश स्कूल के जितने भी मेंबर्स हैं वो एक परिवार का भाग है और उस परिवार के फादर का रोल मॉडल निभाते हैं हमारे रिस्पेक्टेड डियर एंड लविंग ट्रस्टी सर महेंद्र सर. उनके बारे में मैं आपको जितना भी बताऊँ कम है. I have plenty of things to say about him. Yes, a person who has the dream to provide maximum employment to the people is between us. And in today's day, he has provided lot of people lot of employments. उनका एक सपना था कि वो maximum लोगों को रोजगारी पहुंचाए. Because the big question in India today is unemployment. So the person between us is a role model for us, who is very calm, who is very knowledgeable, and a fond of singing. The second person whom I know is mother for Image Parivar. Yes, a role model as a mother who always take care about us, who always loves us, who always guides us as a mother. None other than our respected, loving and caring trustee ma'am, Pragna ma'am. Most caring person I have seen because I have spent 1.5 years personally with her. हमारे प्री प्राइमरी सेक्शन में मॉर्निंग शिफ्ट में जो फूड दिया जाता है बच्चों को, हाइजीनिक फूड, वो पूरा डिपार्टमेंट हमारे ट्रस्टी मैम सब आते हैं. हाइजीनिक मेनू, न्यू रेसिपीज, न्यू डिशेस लाते हैं और हमें डिलीशियस थिंग्स के बारे में बताते हैं. शी इज़ नॉट जस्ट अ गुड कुक एंड अ मदर, शी इज़ अ गुड राइटर टू. शी हैज़ रिटन मैनी बुक्स लाइक Varsaનો Vaibhav, which is a Gujarati proverb book, Dada Dadino Khajano, which is a story book for kids, Kitchen Express, as she is a very good cook. She has given a lot of recipes for the other people, other ladies. जैसे मुझे अगर कभी भी कुछ नया आइटम बनाना हो तो मैं गूगल या यूट्यूब पे सर्च नहीं करूँगी, बिकॉज हमारी ट्रस्टी मैम ने ऑलरेडी इतनी अच्छी बुक लिखी हुई है जिसमें सारी रेसिपीज है. And she was the principal of Anand Vidyalaya and Lotus Primary School, who is taking particular care of each and every student by visiting personally in every classes every day. She cares mostly about girls. She solves the problem of our girl students, and she gave the concept of Mother's Picnic, Mother's Cooking Competition, and yes, Mother's Club, which was very much important because a mother is the first teacher of a child. મેડમ ને કહા था कि માતાજી હોય ને એ જ બાળકના વિકાસમાં સૌથી મોટો ભાગ છે. એટલા માટે માતાઓ માટે પણ જેટલી પણ પિકનિક છે, ક્લબ છે, મધર્સ કુકિંગ કોમ્પિટિશન છે, એ અમારા રિસ્પેક્ટેડ મેમ, અમારી રોલ મોડલ જે છે, જે અમારા માતા સમાન છે, એ ઓર્ગેનાઇઝ કરે છે. The third alumni who is present here, our respected trustee sir Yogesh Tomar sir, who is always supporting us in every bad and good situation, who is always been the part of every occasion of Image Parivar. So I would request our dear trustees to be on the dais because हमारे टीचर्स के लिए हमारे गुरु, हमारे रोल मॉडल, हमारे ट्रस्टीज हैं. So हमारे staff members, we all the principals, we all the staff members of a teacher, all the sir are going to take the blessings of Image Parivar's pioneers and ways. So be ready to take blessings. आप तो लाइव ले लेंगे बट हम प्रेजेंटली फिजिकली ले पाएंगे. So आप घर पर बैठे बैठे भी blessings लें and be connected. So I would request respected trustee sir and trustee ma'am to be on the dais, and I would request all my dear staff members to come forward for the blessing session.
ठीक है। Did you write this song for you? To thank you for making me smile. I know you had a lot to do. I'm glad that you paused a while. You took time to listen and to hear, to laugh and just be there. I heard that lesson loud and clear. I'm added to you each year.
So all my dear viewers, you know this slideshow was showing कि आज तक हमारे बच्चों ने इमेज इंग्लिश स्कूल में एजुकेशन कल्चरल सभी इवेंट्स में हमेशा फर्स्ट पोजीशन ली है. All the teachers have dedicated their immense contribution. They have given lots of effort to make your child best, great and best. Image English School having pre to 12 science plus commerce stream with ACMED class. So ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपने स्लाइड शो में जो भी देखा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आते हैं? जैसे कि मैंने कहा कि हमारे रिस्पेक्टेड ट्रस्टी सर महेंद्र सर के बारे में मैं जितना भी कहूँ उतना कम है. अ पायनियर एंड डेज ऑफ इमेज इंग्लिश स्कूल, फादर ऑफ इमेज परिवार. उनकी वर्क्स की मैं बात बताऊँ, आई एम वेरी स्मॉल पर्सन टू स्पीक अबाउट हिम बिकॉज आई हैव a drop of knowledge and he has an ocean of knowledge. अगर मेरे पर जब भी हमें कुछ प्रॉब्लम होती है और मैं पर्सनली उनके पास जाती हूँ ना, तो वो मुझे कहते हैं कि बेन તમને ખબર છે હું પણ શિક્ષક હતો એટલે મને શિક્ષકની વ્યથા ખબર પડે છે અને હું શિક્ષકની વ્યથાને સમજું છું. He was a teacher in Saraswati Mandir School. He was and he is a best students and parents counselor. He is a speaker and trainer in BA colleges. If I talk about his great personality, a motivating person, the best guide, a best teacher, yes, he is always motivating. बहुत सरस बात यही है कि हमेशा एमना टीचर्स एमबी अंडर काम करता है टीचर्स ने हायर. मैंने आज तक अपने करियर में ऐसा कॉन्सेप्ट किसी स्कूल में नहीं देखा, which is an image English school. Yes, as I told, India is facing the problem. The biggest problem is unemployment, बेरोजगारी. Where this man always thinks and says कि भाई हमारे मैक्सिमम लोगों ने रोजगारी आपी है. So he is the great person in my eyes. Yes, if I talk about his motto, he always says જ્યારે પણ હું જોવાનું કે સર આવું થઈ ગયું આવું, બેન હંમેશા યાદ રાખજો હું 3 વસ્તુ જીવનમાં ફોલો કરું છું. યસ, he is a proud ગુજરાતી અને એમને ગુજરાતી ભાષાથી બહુ જ પ્રેમ છે. તો એ હંમેશા મને તો પણ ઇંગ્લિશના 3 એક એવા મોટો શીખવાડતા હોય છે જે મને પર્સનલી બહુ ગમે છે કે બેન નો બાયસ, नो प्रेजुडाइज, फॉरगेट द पास्ट. वो हमेशा कहते हैं नो बायस, नो प्रेजुडाइज, फॉरगेट द पास्ट. एज बीइंग अ प्राउड गुजराती, ही हैज હવે કહેવાય ને કે શહેરનો માનવી હંમેશા વિચારે કે શહેરમાં હું વધારામાં વધારે નામ કમાવું. ગામડાના વ્યક્તિઓ પણ એવું વિચારે કે અમે શહેરમાં જઈને પ્રગતિ કરીએ. Yes, a person who is living in a village, जो व्यक्ति गांव में छोटे से बड़े से गांव में रहता है, वो हमेशा सोचता है कि मैं बड़े से शहर में जाऊं और वहां पे अपनी प्रगति करूं. हमारे ट्रस्टी सर हमारा एवा रोल मॉडल जिस शहर माथी गामडाમાં ગયા છે, जो शहर से गांव में गए हैं गांव के बच्चों का उद्धार करने के लिए. एंड ही हैज फाउंड इमेज इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट टू प्रोवाइड एजुकेशन टू दोज स्टूडेंट्स who are facing very much difficulties for education in village. The village is Matar. ખેડા જિલ્લાની અંદર માતર ગામમાં બહુ જ મોટી જગ્યામાં એક સરસ મજાનો પ્રેમાઇસીસ છે જ્યાં ઇમેજ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ટેકનિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ડેવલપ કરી છે અમારા રિસ્પેક્ટેડ ટ્રસ્ટી સર મહેન્દ્ર સરે. વેર વી હેવ 5 different fields: mechanical engineering, electrical engineering, civil engineering, computer engineering and automobile engineering, who is always motivating teachers by sending in seminar, workshop. अलग अलग सेमिनार्स में हमें भेजते हैं, वर्कशॉप्स में भेजते हैं. वैकेशन में स्टूडेंट्स के लिए सेमिनार्स एंड वर्कशॉप बैचेस स्टार्ट करते हैं. हु इज प्रेजेंटली द मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ 7 different school, none other than a great personality, Mr. Mahendra Thakkar. Have a big round of applause for our respected trustee sir, and I would request કે અહીંયા બધાએ આનંદના અમૂલ્ય શબ્દોથી આપણા જેટલા પણ વ્યુઅર્સ અને પેરેન્ટ્સ છે એમને 2 શબ્દોથી આશીર્વચન આપે. Good morning, my dear parents, students, and kingmaker of the world, my dear teachers. આજે ટીચર્સ ડે નિમિત્તે હું આપ સર્વેને મારી શુભેચ્છા પાઠવું છું. બધાને થતું હશે કે ભાઈ 5મી સપ્ટેમ્બરે ટીચર્સ ડે ઉજવાય છે, પણ એનો પણ એક મોટો ઇતિહાસ છે કે ભાઈ શા માટે 5મી સપ્ટેમ્બરે ઉજવાય છે.
સામે આપણે હમણાં જોતા હતા ડૉક્ટર રાધાકૃષ્ણ સર્વપલ્લીનો એમનો પોઝ હતો. જે ડૉક્ટર રાધાકૃષ્ણન છે એ ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ પણ હતા અને રાષ્ટ્રપતિ પણ હતા. અને રાષ્ટ્રપતિ હતા એ પહેલાંની હિસ્ટ્રી હું તમને થોડી જણાવી દઉં. એમનો જન્મ 5મી સપ્ટેમ્બર 1888ની સાલમાં તામિલનાડુમાં મદ્રાસની નજીક તિરુનાની ગામમાં થયો હતો. તેમનું એજ્યુકેશન પ્રાઇમરીથી માંડીને સેકન્ડરી સુધીનું ભારતમાં થયું હતું. ત્યાર પછી વિદેશના ઘણા બધા સ્ટેટમાં તેમણે પોતાનું એજ્યુકેશન પ્રાપ્ત કર્યું અને છેલ્લે ભારતની અંદર કુલ એમણે 40 વર્ષ સુધી શૈક્ષણિક કાર્ય કર્યું. અને ભારતમાં માત્ર સ્કૂલ લેવલે જ નહીં, કોલેજ લેવલે, યુનિવર્સિટી લેવલે અને વિદેશમાં પણ એમને ઘણી બધી જગ્યાએ શૈક્ષણિક કાર્ય કર્યું. આમ 40 વર્ષના બહોળો અનુભવ. અને ઘણી વખત તો એવું થતું કે ઇંગ્લેન્ડની અંદર એમના ભાષણોનો ક્રેઝ એટલો બધો હતો કે જ્યારે એમનું ભાષણ હોય ત્યારે લોકો જોબ ઉપર રજા મૂકીને પણ એમના ભાષણ સાંભળતા હતા. અને આજે પણ ડૉક્ટર રાધાકૃષ્ણ સર્વપલ્લીના 150 પુસ્તકો માર્કેટમાં અવેલેબલ છે. અને એ બધા એટલા સરસ અને સાહિત્યિક પુસ્તકો છે કે જો જે વાંચે છે એને એમ લાગે છે કે આ પુસ્તક આપણે પૂરું કર્યા વગર ઊભું નથી થવું. એમ ડૉક્ટર રાધાકૃષ્ણને 150 પુસ્તકો સમાજને આપ્યા છે અને એ આપણા માટે ખૂબ લાભદાયી છે. હવે મુખ્ય વાત એ આવી કે ડૉક્ટર રાધાકૃષ્ણન છે એ અહીંયા આગળ રાષ્ટ્રપતિ તરીકે સેવા આપતા હતા. પણ એમના ફોલોઅર્સ ભારતમાં એટલા બધા હતા કે 1962માં એમના હાથ નીચે ભણેલા ઘણા બધા લાખો વિદ્યાર્થીઓ નક્કી કર્યું કે આપણે ડૉક્ટર રાધાકૃષ્ણનો જન્મદિવસ ખૂબ મોટા પાયે ઉજવવો છે. એટલે 1962માં બધા એમની પાસે રૂબરૂ મળવા ગયા અને કહ્યું કે અમારે તમારો જન્મદિવસ ઉજવવો છે. એટલે એમણે કહ્યું કે તમારી વાત બહુ સરસ છે, તમે જન્મદિવસ ઉજવો એ મને ગમશે, પણ આજના દિવસને આપણે ટીચર્સ ડે તરીકે સેલિબ્રેટ કરીશું અને પછી કાયમ 5મી સપ્ટેમ્બરે ટીચર્સ ડે તરીકે સેલિબ્રેટ થાય એવું આપણે નક્કી કરીશું. એટલે 5/9/1962ના રોજ સૌ પ્રથમ ટીચર્સ ડેનું સેલિબ્રેશન થયું, જે આજ દિન સુધી ચાલુ છે. અને હું એમ કહી શકું કે રાધાકૃષ્ણને જે આ ટીચર્સ ડેની જે સ્થાપના કરી અને આજે ભારતના કે વિશ્વના તમામ લોકો જુએ છે કે ભાઈ ભારતમાં ટીચર્સ ડેનું કેટલું મહત્ત્વ છે. ઘણા બધા માણસો કદાચ 1 દીવો કે 2 દીવા પ્રગટાવી શકે છે, પણ આપણા ટીચરો અનેક દીવા પ્રગટાવીને એટલા મોટા અજવાળા ફેલાવે છે કે એ લોકોને હું જેટલા અભિનંદન આપું એટલા ઓછા છે. આજના દિવસે હું મારા તમામ શિક્ષકોને, દેશના તમામ શિક્ષકોને ટીચર્સ ડેની શુભેચ્છા પાઠવું છું અને એક નાનકડી વિનંતી કરું છું કે તમારી પાસે જે નોલેજ છે એ તો છે જ, પણ હવે જે ડિજિટલ ઇન્ડિયા તરફ તમે લોકો આગળ વધો અને ટીચર્સ કોઈ દાડો પૂર્ણ થયેલો ગણાતો જ નથી. આગળ ને આગળ ડિજિટલ એજ્યુકેશન પ્રાપ્ત કરો, એનો લાભ ભારતના તમામ વિદ્યાર્થીઓને મળે એવી મારી વિનંતી છે. અસ્તુ. Thank you so much, respected sir, for your golden words. As he told कि शिक्षक जो है ने हमेशा सीखते रहे हैं, that's the truth. आप देख रहे हैं कि इस सिचुएशन में टीचर्स बहुत कुछ सीख रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल बन रहे हैं. एक बात कह रही थी कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए. जब हमारी सृष्टि की सर्जनहार भगवान श्री कृष्ण को भी उनकी जरूरत पड़ी थी गुरु की, शिक्षक की, दैट वाज महर्षि सांदीपनि जी. वैसे ही आज की तारीख में भी हमारे जो एक्स स्टूडेंट्स हैं अपने टीचर्स को अपने गुरु की तरह मानकर याद करते हैं. सो नेक्स्ट जो हम आपको बताने वाले हैं, हमारे प्रीवियस एक्स स्टूडेंट्स जो अपने व्यूज अपनी स्कूल से रिलेटेड और अपने टीचर्स से रिलेटेड देना चाहते हैं. लेट अस हैव अ लुक ऑन द views of our previous ex-students, images, ex-images. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaः. September 5 is the birth anniversary of Bharatratna Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He was the first Vice President and the second President of India. This day is marked as National Teachers' Day. Who is a teacher? Asatoma Satkamya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityunjaya Amritamaya. The one who takes you from the falsity to truth. The one
who takes you from darkness to light. The transformation of you from a non-living being to a living being is done by a teacher. For me, Image has done the same thing. Image was a base for me to make a career, a structure and all that. You know, every building is strengthened by a strong base. I got that base from Image. Regna ma'am, Mahendra sir, Preeti ma'am, they all guided me throughout my life. I still have the liberty to call Shaji sir at any point of time and take advices from him. The relation between a student and a teacher is not just important in the school, it is immortal. Happy Teachers Day. Hello everyone, myself Sunny Kuki, and on this day I am really honored to greet all of my lovely and dearest teachers of me. Very happy Teachers Day to all of you. As I talk about myself, I'm working here from senior till 10th, then I offline and then to during the when right now I'm studying college of engineering, studying computer science. I can say that no other institute or college is as helpful as me. So it is the best chance to school life in Bachelor with all the facilities faculty, principal ma'am, assistant ma'am, business ma'am, physical facilities, head, professor, head, assistant ma'am, everything ma'am, all of them were very much helpful to me as well as all of my classmates. I'm a pretty problem free, study related, multiple all these problem free, and like it is starting my mental life. They were also there at the end for helping us. So I'm very much thankful to all of my teachers for this. And even I am feeling very much proud to be an Canadian. So thank you so much all the faculty for this love and care that you have given to all of us. And once again, I am very happy to be with all of you. Whoever watching this. I wish to all my teachers a happy Teachers Day, and on this day I have made this video to draw some attention of the students who are in school at present. In this pandemic situation, school plays an important role in our career. It is just like laying the foundation of a big building, so we must get the perfect guidance for this. And I personally had studied the Image, have got that guidance from all the teachers which was bang on target. Right now I am pursuing Chartered Accounting course and luckily in the finals. Everyone knows how much dedication and knowledge is required to step into this course, and I can proudly say that I got this guidance from all my teachers. So I just want to convey that follow your teacher's guidance and pursue your dreams. Special thanks for the constant support to Saji sir for giving the path forward to the success and dreams. Happy Teachers Day, stay safe. Hello everyone, and a very happy Teachers Day to all the lovely teachers out there who are currently rocking the platform of e-education. I hope you all are in the very best of your health. Myself, Saint Pravichi, and I'm currently pursuing doctorate degree in the field of pharmacy. And I completed my secondary education from Image. Talking about Image, Image was like a safe blanket. The teachers not only helped us through our academic sessions, but they also helped us in building up our very first blocks of growth towards being a human. And the very valuable things, the most valuable things Image has given me is my temperament and my perspective towards the world. And I'm very thankful for that. And my heart goes out to all the teachers who are trying their best to keep up the education system in this rampant of a situation. And I hope this all will be over and you all will be coming back to school very soon. And again, a very happy Teachers Day to all the relentlessly diligent teachers. Thank you so much.
So this were the reviews. This were the thoughts of our image ex-students who were studying in the past. आज भी वो अपनी स्कूल, अपने टीचर्स, अपने ट्रस्टीज, अपने प्रिंसिपल्स को उतना ही प्रेज करते हैं, प्यार करते हैं जितना वो करते थे और करते रहेंगे. They all are in a good position. They are pursuing very good education, and they believe that image was the base for their good education. Next, I would like to request a person who has joined Image English School in 2002. When Image started, that beautiful and very much talented lady was with Image in 2002. And today also she is with Image. But the thing is, परिवर्तन जीवन का नियम है. She joined Image as a teacher, then she became supervisor, and today she is the principal of Noonship Image English School. I would request respected principal of Noonship, Birju Bhatt ma'am, to please come forward and share her views. Thank you, Shivani ma'am. Good morning, all of you. This is the English medium school. Each and everybody is speaking in English, but today I just give you my speech in Gujarati because I am the teacher of Gujarati. So just started with the Gujarati only. मंचस्थ बैठेला ट्रस्टी सर, महेंद्र सर, प्रज्ञा मैम, योगेश सर, प्रीति मैम, शिवानी मैम, मारा शिक्षक मित्रों, સૌથી વાલા મારા વિદ્યાર્થી મિત્રો અને જે ઓનલાઈન મને જોઈ રહ્યા છે બધા વ્યુઅર્સ, દેટ મીન્સ મારા પ્રેક્ષક મિત્રો, આજે હું બિરજુ ભટ્ટ, આજે હું તમને મારા મંતવ્યો જે રજૂ કરવા માંગુ છું. 5મી સપ્ટેમ્બર ડૉક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનનો જન્મદિવસ, જેને આપણે ટીચર્સ ડે, શિક્ષક દિન તરીકે ઉજવીએ છીએ. શિક્ષક દિન તરીકે આપણે એને ઉજવીએ છીએ અને કેમ ઉજવીએ છીએ બધાને ખબર છે. અને આની પહેલાં મહેન્દ્ર સર પોતે આવે, એમણે પણ એના માટેનું બ્રીફિંગ ઓલરેડી આપી દીધું છે. પણ આજે મારે તમારી સાથે એના વિશે વાત નથી કરવી. મારે આજે તમારી સાથે એના વિશે વાત કરવી છે કે ટીચર્સ ડે કેમ ઉજવવો જરૂરી છે. વાય ધ નીડ ઓફ ધ સેલિબ્રેટેડ ટીચર્સ ડે. બરાબર છે. હું મારી પોતાની જો પર્સનલ વાત કરું ને તો આજથી 400 વર્ષ પહેલાં ચાણક્યનું એક સ્ટેટમેન્ટ હતું કે શિક્ષક કભી સાધારણ નહીં હોતા, उसके हाथ में प्रलय और क्रांति है. એ સેન્ટેન્સને મેં હંમેશા મારા જીવનમાં ઉતાર્યું છે એક મોટિવેશન તરીકે, કે જેણે હંમેશા એવું શીખવાડ્યું છે કે ટીચર્સ છે ને એ સાધારણ તો હોઈ જ ના શકે. કેમ? કારણ કે સમાજનું ઘડતર કરી રહ્યા છે. મારી પોતાની વાત કરું તો નાનપણમાં જ્યારે ટીચર્સ ડે આવતો ને ત્યારે ઓલરેડી બહુ જ એક્સાઇટેડ હોઈએ કે સિલેક્શન થાય કે કોણ ટીચર્સ બનશે. અને જ્યારે પણ મારું સિલેક્શન એઝ અ ટીચર થાય બહુ ગૌરવ અનુભવ્યું. ઘરે જઈને એટલું પ્રાઉડ હતી કે આજે હું ટીચર્સમાં સિલેક્ટ થઈ ગઈ છું. ઘરે આવીને ભીતોની ઉપર લખવાનું, સાડીની જગ્યાએ દુપટ્ટો નાખીને એઝ અ ટીચર બનીને ફરવાનું અને બધાને એવું કહેવાનું કે તમારે મને ટીચર કહેવાનું કારણ કે હું ટીચર બની છું. એ જે વસ્તુ થાય એ ટીચર્સની જે હતી ડેફિનેશન મીન્સ ગૌરવ અનુભવતી કે બસ આપણે ટીચર બની ગયા. આખો દિવસ આવી રીતના નીકળી જતો. પણ એક શિક્ષકે આપેલું જ્ઞાન જે જીવનના ઘડતરનું પ્રેરક બળ બની રહે છે ને, એ મને ત્યારે સમજાયું જ્યારે હું પોતે ટીચર બની. જ્યારે હું પોતે શિક્ષક બની ત્યારે મને રિયલાઇઝ થયું કે મારા નાનપણમાં મને આપેલું જે જ્ઞાન છે ટીચર્સ દ્વારા, જેને હું એઝ અ ટીચર બીજાને આપી રહી છું. અને એટલા માટે થઈને બહુ જ પ્રાઉડ અનુભવું છું. કોઈ ટીચરને એવું પૂછે ને કે ભાઈ શિક્ષકનો સમાજમાં ફાળો શું, તો શિક્ષકનો સમાજમાં ફાળો શું એવું કહીએ ને તો શિક્ષક એક જ જવાબ આપશે કે ભાઈ સમાજનું ઘડતર છે ને શિક્ષક કરે છે, નહીં કે શિક્ષકનું ઘડતર સમાજ. અને એટલા માટે શિક્ષક એક પાયો કહેવાય છે, સમાજનો પાયો છે. આજની આ જે પરિસ્થિતિ છે એની અંદર જો આપણે વિચારીએ તો બધાને ખબર છે કે વિશ્વમાં જે મહામારી ચાલી રહી છે ને એની અંદર તો બધાને ખબર પડી ગઈ છે કે ટીચર્સ કેમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર છે. ટીચર્સ કેમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? જે ટીચર બધાએ પોતાના કામ ધંધા સપોઝ મોસ્ટ પ્રોબેબલી 1 and 2 month બધાનું બધું જ કામ બંધ રહ્યું છે. ટીચર જ એક એવી વ્યક્તિ હતી કે જે લોકડાઉનની અંદર પણ પોતે ભણી છે,
પોતે નવી ટેકનોલોજી શીખી છે અને એણે એના બાળકોને શીખવાડ્યા છે. એટલે દેટ મીન્સ કહેવાનો મતલબ કે શિક્ષક જ એક એવું પરિબળ છે સમાજમાં કે જે પોતે હંમેશા ભણતું રહે છે, ભણાવતું રહે છે. ના એને ઉંમરનો બાદ છે, ના એને સમયનો બાદ છે. અને આ બધું જ કે આપણે છેલ્લે બસ એક જ વસ્તુથી હું કહીશ કે કોલસાની ખાણમાંથી હીરો શોધવો સહેલો છે. કોલસાની ખાણમાંથી હીરો શોધવો સહેલો છે, પણ એ કોલસાને હીરો બનાવવો એ અઘરો છે. એ કોલસાને હીરો બનાવવો અઘરો છે અને એ હીરો ફક્ત ને ફક્ત શિક્ષક જ બનાવી શકે છે. તો હેપી ટીચર્સ ડે ટુ ઓલ માય વ્યુઅર્સ, ઓલ માય સ્ટુડન્ટ્સ એન્ડ માય ટીચર્સ ઓલ્સો. શિક્ષક દિનની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. થેન્ક યુ. Thank you so much, ma'am, for sharing your memories with us, golden memories. Next जिन्हें मैं बुलाने छू, नेक्स्ट जिन्हें मैं बुलाने वाली हूँ. मैं जब छोटी थी और आज की तारीख में भी मुझे एक सब्जेक्ट से बहुत डर लगता है और मुझे अच्छा नहीं लगता है. That is maths. Yes. So the person who is always guiding Imagians for maths, who is the king of maths, I can say, for all Imagians, none other than Tushar Dave sir. थैंक यू मैम. मुझे लाइव देखने वाले आचार्यगण, शिक्षकगण, वालीगण और मेरे प्यारे छात्र, सबको मेरी तरफ से शिक्षक दिन की हार्दिक शुभकामनाएं. हमें मालूम है कि हम शिक्षक दिन क्यों मनाते हैं. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन हम सेलिब्रेट करते हैं और उन्हीं के मान में हम मनाते हैं शिक्षक दिन. शिक्षक का मतलब क्या होता है? शी का मतलब होता है शिक्षा देके अंधकार से ज्ञान की तरफ ले जाने वाला. श का मतलब होता है क्षमा देने वाला. क का मतलब होता है कमियों को दूर करने वाला, जिसको हम कहते हैं शिक्षक. शिक्षक वो होता है पानी की तरह होता है. जैसे पानी कोई भी आकार में ढल जाता है, वैसे ही शिक्षक छात्र में ज्ञान का संचार करने के लिए अपने आप को कोई भी परिस्थितियों में डाल देता है. जिसका मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहूँगा. जैसे मुझे बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर आपके जो डीपी है फेसबुक और व्हाट्सएप पे आप चेंज क्यों नहीं करते? मेरा एक ही जवाब होता है अच्छा लग रहा है ना, क्यों चेंज करने की ज़रूरत है. मैं आज उसका जवाब दे रहा हूँ क्योंकि वो मुझे चेंज करना नहीं आता. कब की बात कर रहा हूँ मैं? कोरोना पैंडेमिक के पहले की बात कर रहा हूँ. लेकिन आज देखिए, आज हम शिक्षा के हर एक तकनीक से अवगत है जो आपके लिए बहुत उपयोगी है. तो आपके अंदर शिक्षा लाने के लिए हमने वो तकनीक सीख ली है. तो आज का शिक्षक जो मोबाइल का उपयोग सिर्फ और सिर्फ कॉल करने के लिए, रिसीव करने के लिए, पिक खींचने के लिए यूज़ करता था, आज उसी मोबाइल को अपना हथियार बनाते हुए सभी छात्रों को शिक्षित कर रहा है. हम टीचर हैं जो हर एक विद्यार्थी के जीवन में प्रकाश फैलाते हैं और हमें विद्यार्थियों की परीक्षाओं से पास भी होना पड़ता है. आप सोचोगे ये सर क्या बोल रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि अगर कोई भी छात्र को सही शिक्षा देनी हो तो उसका मन जीतना जरूरी है. मैं आपको एक प्रसंग से समझाना चाहूँगा. एक छात्र था, उसको अपने गुरु का ज्ञान चेक करना था. उसने क्या किया? अपने दोनों हाथ में एक चिड़िया ले लिया जिसका जो गर्दन थी वो उसके एक हाथ में था. अब उसने शिक्षक से पूछा कि बोलिए मेरे हाथ में जो चिड़िया है वो जिंदा है या मरी हुई? अब शिक्षक ने बहुत बढ़िया जवाब दिया उसको, बेटा चिड़िया का जीवन तेरे हाथ में है. छात्र ये सुन के चौंक गया. कैसे सर? उसने बताया कि अगर मैं आपको बोलूँगा कि चिड़िया जिंदा है तो आप उसका गला दबा के मार दोगे,
अगर मैं बताऊंगा कि चिड़िया मर गई है तो आप अपना हाथ खोल के उसको उड़ा देंगे। ये हमारी परीक्षा है। तो मतलब शिक्षक हर एक परिस्थिति में अपने आप को ढालता है। होशियार विद्यार्थी को होशियार बन के समझाता है, कमजोर विद्यार्थी को उसकी कमियां जानने के लिए कमजोर बन जाता है, और शरारत करने वाले विद्यार्थी को शरारती बन के भी समझाता है। ये भी मैं आपको एक प्रसंग से बताना चाहूँगा जो मेरे साथ ही घटित हुआ है। एक्चुअली मेरे एक विद्यार्थी ने उसके घर पे कोई प्रसंग था तो मुझे बुलाया हुआ था, इनवाइट किया था, तो वहाँ पर मैं गया था, बैठा हुआ था, दूसरे बहुत सारे लोग भी मेरे आसपास थे। तभी मेरे एक एनसी स्टूडेंट दूर से मुझे बोला कि सर दूर से ही पाए लागू। क्या उसने मुझे बताया? दूर से ही पाए लागू। उस टाइम पे मैं बहुत असमंजस में था कि क्या जवाब दूं। अगर मैं उसको जवाब दे देता हूँ तो सामने वाला सोचेगा कि क्या शिष्टाचार हमने उसको सिखाए हैं, ऐसे आशीर्वाद दिए जाते हैं। अगर मैं कुछ नहीं बोलता तो सामने वाला सोचता कि शिक्षक कितना कठोर है। तब मैंने उसको जवाब दिया कि बेटा तेरे को बोर्ड में मार्क्स की 100 से दूर दूर तक आए। वो विद्यार्थी समझ गया कि सर क्या कहना चाहते हैं। तुरंत वो मेरे पास आया और उसने मेरे पैर छुए। तो शिक्षक ऐसी हर एक परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार रहता है। अंत में मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहूँगा जो है, शिक्षक वो है जो टूटे हुए सुरों को जोड़ के नया संगीत बना देता है। नौसिखे परिंदों को उड़ना सिखा देता है। चुपचाप सुनता है सबकी शिकायतें और दुनिया बदलने की आवाज बना देता है। समुद्र की लहरें तो कस्सियों को तोड़ देती है, लेकिन शिक्षक वो होता है जो टूटी हुई कस्सियों को जोड़ के जहाज बना देता है। दुनिया चांद पे बुर्ज खलीफा बनाने का सोच रहा है, लेकिन शिक्षक तो वो है जो मिट्टी में से ताजमहल बना देता है। अंत में सभी वालीगण को मेरी तरफ से अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं और फिर से शिक्षक दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। ही इज द पर्सन जिन्हें मैंने सिर्फ गणित से जूझते हुए देखा है। जब भी मैं उन्हें लाइव लेक्चर्स के लिए देखती हूँ, वो गणित की किताबों के साथ होते हैं, ब्लैक बोर्ड पर गणित के साथ होते हैं। आज पहली बार मैंने उन्हें इतनी साहित्य की नॉलेज के साथ देखा है। दैट इज द थिंग कि शिक्षक अपने आप को हर सांचे में ढांकता है। नेक्स्ट पर्सनालिटी, अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी जिन्हें मैं आमंत्रित करने वाली हूँ, उनके बारे में भी मैं यही बताना चाहूँगी कि जब इमेज का पाया रखा गया 2002, yes, he also joined Image Parivar in 2002 when Image started. Presently, he is the head of the Department of General Stream and he is teaching account and tech. Not only that much, he is always active in all the cultural events. He is always there for the guidance of each and every section, in every student's mind. He is as a multi-talented gem. That is our, yes, multi-talented sir, head of the Department of General Stream, Saji Nair sir. Thank you, ma'am, for your appreciation words. Once again, good morning, respected trustee sir, Mahendra sir, respected trustee ma'am, Pragna ma'am, the principal of morning shift, Mrs. Preeti Verma, principal of noon shift, Mrs. Birju Bhatt, principal of pre-section, Ms. Shivani ma'am, and all my dear friends, a happy Teachers' Day once again. I think we all know we are celebrating the Teachers' Day on 5th September, but when it started, that is from 1962, since 1962 we are celebrating the Teachers' Day. So this is the 58th Teachers' Day. See, in every occasion we used to say this is the 74th Independence Day, this is the 66th Republic Day, but which year is this? This is 58th year of Teachers' Day.
internationally, Teachers' Day is celebrated on October 5. Now come to the point, what I want to say over here. So I believe this is not Teachers' Day, it's a Learner's Day. Because a teacher is always a learner. If I learn something, then I can give the knowledge to others. For an example, when I joined this school in 2002, I was like a blank page. The first question asked by the principal was, what is the qualification of a teacher? So now you will be thinking that the qualification may be MCom B.Ed or BSc B.Ed or BA B.Ed. My answer was the interest. Interest is the best qualification of a teacher. If I am not interested in teaching, if I don't have the convincing power, if I don't love my job, then I can't teach. Very first thing, interest must be there. That I have learned. When I joined over here, Mahendra sir was there, a pioneer of the image school. From him, I learned a lot of things. How to be stable, how to be cool and calm in different situations. And he always used to motivate me, and some words he says in Gujarati, कि प्रगति हमेशा धीमी गति थी, and जे प्रगति धीमी गति थी पण स्थायी. So that is the thing which I learned from the Mahendra sir. Second, mother of our image school, Pragna ma'am. See the way the lady is handling the house and the school, and the love she gave all of us. That kind of love I have learned from the Pragna ma'am. And one more lady is there from whom I learned one sentence, one quote, work is worship. Right? And she's none other than Preeti Verma ma'am, our morning principal ma'am. She always have a dedication towards the work. She taught us, see, whatever the situation is that, you should be never depart yourself from your duty. Any situation. So that I have learned from ma'am. One more person who is very much witty, intelligence. She remembered everything. If you say that what happened in 1947, she can count. Okay, by 1947 this happened, 1948 you said this thing, and 1958 this happened. That much intelligence she has, and she is none other than our Belgium ma'am, the principal of Nunshi. And recently I have been in contact with Shivani ma'am, the multi-talented person. Apart from the teachers, many qualities are there. That also I can. She has told me that multi-talented, but she is more talented than me. So I have learned acting also, how to be an RJ, how to speak in the way, in the function and all. That quality I have learned. And see, why I am telling this thing, you have to be learner because see, when we are learning something, then you can give the things. I have learned this kind of mobile is there. I learned from my small kid how to open the camera without opening the code from my daughter. She taught me this kind of thing. So see, the learning can be done with anyone. It's not like the age factor is there. You can learn from anyone. Same way during this pandemic, see, we were not at all aware of the technology, right? We have updated ourselves. Maximum use of apps we have tried. We searched the things, how we can make the teaching learning process interactive, effective way, right? So this also taught us. Many people have been panicked during the situation, and I think I was searching the apps and all. See, this is happening. This is the situation is there, but what to do next? How I can teach my students in such situation? So that was a question mark in my mind, and I remember in our school every year a training session of teachers are there to update ourselves. You people have been updating your phones from touchpad to the screen, right? From that box TV to the smart TV, right? The simple phone to the smartphone. Same way from the classroom to the technological class, online classes we have learned. So it was a very difficult thing. But challenges are always accepted by the teachers, right? We don't think about the virus. We have gone for checking. We have gone for the survey. We have, the best gift I got as a teacher's day before 2 days.
When ma'am has given a target that we have to make an online video of the students. 4 students of 12th standard have given this target, and 2 of the students they came at my home. Sir, ये 10 मिनट का वीडियो पूरा दिन ले रहा है. Right, the whole day they've gone for that 10 minutes video, and it's difficult to upload also. Sir, how to upload? How to do the things? They just appreciated, sir. अब पता चला कि वो 10 मिनट के वीडियो के पीछे कितनी मेहनत होती है और उसको हम नहीं देखते हैं तो कितना बुरा लगता है, आज हमें फील होता है. So that was the best gift I received on that day as a Teachers' Day. That's an appreciation for us. See, we don't require money and all, but we require the credit, we require the respect, we require the appreciation. So I request all the students over there, please watch the videos the teachers are making. It's for you people only, especially for the 9th students, for the 11th, because next year you got the board, right? And 10th and 12th, obviously this year you are having the board, so please study properly, go through the lectures properly, attend the things, whatever the assignments and worksheets has been provided by the school. See, it took a lot of time. We are not sleeping, see, sleeping hours are less than 4 hours or 5 years. Each and every person is working like anything. We have left our personal life. I think nobody of the teacher in this field is living their personal life. Why? Because we want that our future generation must be bright, right? Our students should get the best education. So please, parents, take care of your students. Just take care of their studies. Just take care that they are learning from the videos, they are online and they are doing the things properly, submit the homework and everything properly, so that our hard work will give a fruit. Right? Once again, have a safe and happy day, and I just wishing all my kids that whether that good morning sir will do, but I'm missing you all in this campus. You know, it's lonely, I feel alone. Right? It's like nothing is there. It's like skeleton without soul. एक शरीर है बिना आत्मा के. So मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि again we will be back, and I want my immediate throwback, bounce back with a great knowledge during this pandemic we have had. Thank you. Have a nice day. Thank you so much, Saji sir, for your words. आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, आज हमने 3 different languages यूज की है. Yes, we decided कि जितने भी viewers हमें ज्वाइन करते हैं, as an image student, you are very perfect in English, so sir spoke in English. As a proud Gujarati, as I told, our trustee is very much fond of Gujarati language. Our respected Bridget ma'am spoke in Gujarati, and Hindi हमारी राष्ट्रीय भाषा है, so our respected Tushar sir spoke in Hindi. Next person, if I talk about next person, she is not just a person for us, she is, personally if I talk about myself, she is my guru. Because when I came as a pre-primary principal in this premises, she told one thing to me, Madam, सब सीखते हैं, आपको भी सीखना है. I said, Ma'am, मुझे ये नहीं आता, what I'll do? She said, Madam, सब कुछ धीरे धीरे सीखा जाता है. As Mahendra sir says कि प्रगति धीमे धीमे થાય ને તો સ્થાયી પ્રગતિ મળે છે. A person who is always having a smile on a face, who is like, मुझे मैम ने कुछ बताया था, हमारी ट्रस्टी मैम ने, कि मैडम ये बात जरूर कहજો कि દેખાય છે બહુ જ કઠોર પણ એમનું હૃદય બહુ જ કોમળ છે. Yes, because whenever I'm sharing my grief and my personal things with her, she always becomes my partner, she always becomes my friend for me, as she becomes the best guide for all the staff members and teachers. If I talk about her personality, she looks a very beautiful, charming face, and she is having plenty depth of knowledge. I always say कि मैडम आप ही से तो सीखना है, फिर आप ही से क्या मैं बोलूँ. She has joined Image Parivar in 2004, and she is in Image since last 16 years. She has worked as a principal. उनकी principality के बारे में बताऊँ तो she is working as a principal since last 20 years.
She has worked as a teacher. As Mahendra sir says કે હું પણ એક શિક્ષક હતો તો મને એમની વ્યથા ખબર પડે છે. એ જ રીતે she also says always कि मैं भी टीचर रह चुकी हूँ, so मुझे पता है कि एक टीचर को क्या क्या डिफिकल्टीज आती है और उन्हें क्या प्रॉब्लम्स होती है. She has worked as a principal in Airport Saibagh in Central English School, a teacher who has worked, a principal, the best principal who has given the concept of a very important thing I would like to share with the parents जिन्हें नहीं पता कि इमेज इंग्लिश स्कूल हर साल ओलंपियड एग्जाम एंड यूनिफाइड काउंसिल एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करती है. In 2019, इमेज इंग्लिश स्कूल won first prize and our teacher Rashina went to Hyderabad and she got the award. Yes, મને કાલે જ્યારે સરે બતાવ્યું કે આપણી અમદાવાદની અંદર ઘણી બધી મોટી સ્કૂલો છે જે આ એક્ઝામમાં પાર્ટિસિપેટ કરે છે પણ એમનો સેન્ટર નથી. પણ ઇમેજ ઇંગ્લિશ સ્કૂલ એવી સ્કૂલ છે કે જેનું પોતાનું સેન્ટર આવે છે. અ બિગ અચીવમેન્ટ. એન્ડ बच्चों को क्या चाहिए, पेरेंट्स को क्या चाहिए? बेस्ट रिजल्ट. Yes, most important thing is 10th and 12th. Preeti ma'am is the person who has given 100% result of 10th and 12th board, which is a proud moment for Image English School. I would not speak much because I have lots of things to speak about her. A great guide, the best guru, none other than our respected principal of Morning Shift, Mrs. Preeti Verma. Thank you very much, Shivani ma'am. Respected Minister, Thomas sir, respected Pragna ma'am, Honorable Riju ma'am, Principal of Non-Ship, obviously multi-talented Shivani ma'am, Principal of Pre-Primary Section, my dear teachers, my dear students, and my dear parents. Good morning to all of you. Before going further, before continuing the event, I would like to say Shashas Naman to all my gurus from the bottom of my heart. It includes my parents, it includes my pre-teachers, it includes my primary teachers, it includes my secondary, higher secondary, college teachers, it includes my husband, it includes my daughters. Each and everybody has contributed in the development of my personality. So thank you very much to each and everybody. Well, as from the beginning you are watching it out, the concept of the program is thank you teachers. But the way when we entered, when we started to face the corona, the pandemic situation that we started to face, from that particular day I started to blame. Obviously, Sadi sir already quoted that we people are working very hard. 7 to 8 to 9 hours we are working continuously for you people. But we are helpless. See, we are the body. The students are our soul. And without soul, body is meaningless, isn't it? So, I just wanted to say thank you to the parents. I just want to change the title for a second. Instead of thank you teachers, thank you parents. And because 50% role of ours, you people are performing. We are sending you videos, we are sending you assignments, everything. We are working hard, I am not at all denying. But you are the person who is sitting with the kid, who is making him or her to sit for an hour. You people are finishing your regular task as soon as possible. I watched, even you also have gone through on the screen, the way in which the students are busy watching the videos and all. So how could I forget your contribution? So your 50% are responsibility. Nowadays it is performed by you people. On such a day, I have arranged one more session in which I am going to interact. This is a one kind of respect you could say that we wanted to give the parents to be live with us. So I'll give them the call, we'll share somewhat of things with them. But before that, as you know, the situation that we all are facing, the teachers always require a lot of strength. Vaccines are there in the market, and so it was announced that the first trial would take place on doctors and teachers. So why doctors and teachers? Because as is already mentioned in the event also, teacher is the particular one, creator of all the professions, isn't it? So I would like to welcome Swamiji first of all. He is belonging to Hathijan Vidyadham, Shriji Swamiji. I'll get connect with him on the Google Duo, right? And I'll request him to bless we all on such a wonderful and auspicious occasion. So Sadiq sir, please carry on. We'll give a call. Okay, please be continued.
पूछिए सर, अतुल सर प्लीज लैंडस्केप में रखिए ना मोबाइल। सर रोटेशन करके उसको लैंडस्केप में रख दीजिए प्लीज। अतुल सर आपका कैमरा ऑफ हो गया है सर। ओके ओके अब लैंडस्केप में रख दीजिए सर, रोटेशन करके लैंडस्केप। सर रोटेशन। जय स्वामी। हाँ ओके सर, विल डू। प्लीज सर, आज शिक्षक दिन है और हम लोग सभी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, बच्चे, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स। तो सर हम चाहेंगे कि आप अपने आशीर्वचन से हमें आशीर्वाद दें कि हम अपने काम में उतने डेडिकेशन, उतनी आस्था के साथ काम करते रहें सर। प्लीज स्वामी जी। जय स्वामीनारायण। विद्यानां नरस्य रूपमधिकं कश्चन उत्तम धनम। विद्या भोग करे, यशस्सु करे, सुख करे, विद्या पूर्णां गुरु। आ जगतनी अंदर महान जो कोई होय तो जेना जीवननी अंदर विद्या छे ए ज महान छे। अने विद्यामां पण सद्विद्या, विद्याथी एवुं कहेवाय कि विद्याथी श्रीमंत बनाय छे पण सद्विद्याथी शीलवंता बनाय छे। અને આજના સમયમાં આજે પવિત્ર શિક્ષક દિન છે અને ડોક્ટર રાધાકૃષ્ણજી એમના નિમિત્તે આ શિક્ષક દિન ઉજવવામાં આવે છે। એમનું જીવન કેટલું ઉદાર હશે, ડોક્ટર રાધાકૃષ્ણજીનું જીવન કેટલું ઉમદા હશે, કેવા પ્રકારના એ શિક્ષક હશે। ત્યારે આજ આપણે શિક્ષક દિન ઉજવીએ છીએ। साचा अर्थनी अंदर कहीए तो शिक्षक एटले गुरु छे अने गुरुनुं पद केवुं होवुं जोईए। गुरु एटले ज्यां लघुता नथी एने गुरु कहेवामां आवे छे। जेनी अंदर विशाळता छे, जेनी अंदर दीर्घदृष्टि छे, जेनी अंदर मायाळुता छे, वात्सल्यता छे, ए गुरु छे, ए शिक्षक छे। अने हुं तो એટલા માટે કહું કે शिक्षक એ પ્રેમનો સરોવર છે। શિક્ષક એ ત્યાગની સરિતા છે। એ નદી છે પણ ક્યારેય ત્યાગની, એના જીવનમાં ત્યાગવાનું બહુ આવતું હોય છે। શીલ, વાત્સલ્ય અને ઉત્સાહનો ભૂગવતો મહાસાગર એટલે શિક્ષક છે। અને શિક્ષક ત્યારે જ સફળ થાય છે કે હાર્ડ વર્ક અને હાર્ડ વર્ક આ બંનેથી લબોલબ જ્યારે ભરેલો હોય ત્યારે શિક્ષકની સાચી સફળતા છે। અને એટલા માટે હું તો એવું કહું કે શિક્ષકની ખરી સફળતા કઈ કહેવાય તો શિક્ષક વર્ગખંડના વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષકની રાહ જુએ, નહીં કે बेल वागवानी राह जुए। क्यारेक के हमारा शिक्षक आवे आवी राह वर्गखंडना विद्यार्थीओ ज्यारे जोई रह्या होय अरे એટલું નહીં, હું તો એવું કાયમ માટે અમારા શિક્ષકોને પણ કહું છું અહીંયા કે શિક્ષક એ જ સાચો છે કે જેને ઘડિયાળ ન, એનો મતલબ એવું નહીં કાંડે ઘડિયાળ નહીં કહેવાય, પણ જ્યારે વર્ગખંડની અંદર હોય ત્યારે સમયને પણ ભૂલી જાય, बेल वागी खबर न पड़े अने पीरियड बदलातो होय बार साहेबने अपनी राह जोईने ऊभું રહેવું પડે, विद्यार्थीओने पण खबर न पड़े कि समय क्यारे पूरो थई गयो छे अने हजू साहेब अમને ભણાવ્યા કરે, हजू भणाव्या करे। आवो ज्यारे भाव थाय त्यारे ए शिक्षक ए सफળ शिक्षक कहेवाय छे। अने એટલા માટે તો ટોલ્સ્ટોય એવું કહે છે કે શિક્ષક દેવ કરતા પણ મહાન છે અને ચાણક્ય કહે છે કે શિક્ષક या राष्ट्रનો સાચો નિર્માતા છે। અને જ્યાં જ્યાં રાષ્ટ્રોની અંદર ક્રાંતિઓ થઈ છે એના પાયાની અંદર શિક્ષક છે। માટે આજે
આ પવિત્ર શિક્ષક દિવસે એવી પ્રાર્થના કરો કે સાચા અર્થના ઉત્સાહી વાત્સલ્ય મૂર્તિ એવા શિક્ષક બની અને બાળક આપણું બાળક છે, મારું પોતાનું બાળક છે, તો વર્ગખંડની અંદર બેઠેલા 30 બાળકો, વર્ગખંડમાં બેઠેલા 40 બાળકો, એ બધા જ મારા પોતાના બાળકો છે. હું એની માં છું, હું એનો પિતા છું. અને એટલે તો જૂની ભાષામાં શિક્ષકને માસ્તર કહેવામાં આવતા હતા. માસ્તરનો અર્થ એ થાય માં. માનું જેની પાસે સ્તર છે, 5 કલાક સુધી માં પણ યાદ ન આવવા દે અને એવો પ્રેમ આપવાનું જે કાર્ય કરે એ સાચા શિક્ષક છે. આવા શિક્ષક સાચા અર્થના આપણે કાર્યને જાણીએ અને કરીએ એને કર્મી કહેવાય, પણ જે કાર્યને આપણે માણીએ અને કરીએ એને કર્મયોગી કહેવાય. સાચા અર્થના શિક્ષકો કર્મયોગી બની અને રાષ્ટ્રના નવું ભારત, નવું જે આજે ભારત બની રહ્યું છે એની અંદર આપણું ખૂબ યોગદાન આપી અને સારા વિદ્યાર્થીઓ આપણા બાળકો છે અને વાત્સલ્ય મૂર્તિ બની અને કર્મયોગી બની અને સાચા અર્થના યોગીઓ બની જઈએ એ પ્રાર્થના કરું. કારણ કે કર્મ અને કર્મયોગીનો બે ડિફરન્સ છે કે કર્મી કોને કહેવાય? તો 5 સ્ટાર 7 સ્ટાર એવી ઊંચી હોટલ હોય અને હોટલની અંદર સરસ રીતે ડીશો ગોઠવેલી હોય અને એ ડીશોની ઉપર જઈ અને તમે જમો અને જે આનંદ મળે એને કર્મી કહેવાય. પણ વાત્સલ્ય મૂર્તિ મમતા ભરેલી માના હાથેથી પીરસેલી થાળી અને એ જમવામાં જે આનંદ આવે ને એને કર્મયોગી કહેવાય. એટલે આજે સાચા અર્થના વાત્સલ્ય મૂર્તિ બની અને આપણા એક બાળકને, એક વિદ્યાર્થીને સાચા અર્થથી આપણે એવો પ્રેમ આપીએ, એવું શિક્ષણ આપીએ. કારણ કે કેવલ વિદ્યા નહીં પણ સદવિદ્યા આપણે એને આપીએ. કારણ વિદ્યા જે છે બુદ્ધિ સાથે વિવેક જ્યારે જોડાય છે ત્યારે માણસ નહીં પણ માનવતા એમાંથી જન્મે છે અને માણસમાંથી માનવ અને માનવમાંથી મહામાનવ બનાવવાનું કાર્ય જો કોઈના હાથમાં હોય તો એ માત્ર ને માત્ર એ શિક્ષકોના હાથમાં છે. અને એટલા માટે સાચા અર્થમાં આવા શિક્ષકો બનશે. અને આજે મારે કહેવું છે કે ઇમેજ સ્કૂલ અને ઇમેજ સ્કૂલ એના વાલીઓ, એના વિદ્યાર્થીઓ અને એના શિક્ષકો બધા સદભાગી છે. એટલા માટે કે એના મેન જે છે એ અમારે મહેન્દ્રભાઈ ઠક્કર. તો મહેન્દ્રભાઈ એનો આત્મા એ શિક્ષકનો છે. એના પ્રિન્સિપાલ જે છે એ ઇમેજ સ્કૂલના એમનો આત્મા એ શિક્ષકનો છે. આજે મને આનંદ થાય છે દરેક વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓ પણ જો આમાં જોડાયા હોય તો મારે એમ કહેવું છે કે તમારા બાળકો જે વ્યક્તિ જેવો અરીસો હોય ને એવું અહીંયા કણે અરીસો જો મેળો હોય તો એમાં તમારું પ્રતિબિંબ મેળું દેખાય. અરીસો જો શુદ્ધ હોય તો તમારું પ્રતિબિંબ શુદ્ધ દેખાય. મારે એ કહેવું છે કે તમારા સંચાલક શ્રી અને તમારા પ્રિન્સિપાલ શ્રી એ કેવા છે કે મારા વાલી અને વિદ્યાર્થીઓને બતાવવું છે કે એ મહેન્દ્રભાઈ, નીરુભાઈ એમનો આખો પરિવાર જે હોય એ સવારે ઉઠી અને સર્વપ્રથમ પ્રભુનું સ્મરણ કરી, ભગવાનની આરાધના કરી, પ્રાર્થના કરી અને એની સ્તુતિઓ કરે કે પ્રભુ અમારા હાથેથી કોઈ અયોગ્ય કાર્ય ન થાય અને અમારા યોગમાં જે કોઈ આવે એનું પણ શુભ થાય, ભલું થાય. આવા વિચાર કરવાવાળા સંચાલક શ્રી છે. એની સાથે આજે મારે કહેવું છે કે પ્રિન્સિપાલ પ્રતિબેન નિત્ય સવારે અમારા મંદિરોની અંદર દર્શન કરે, સવારે ઠાકોરજીની સામે બેસીને સ્તુતિ કરે. અને મને તો એવું લાગે છે કે પ્રભુની સામે ઉભા રહીને જ્યારે પ્રાર્થના બોલતા હશે ને ત્યારે એવી પ્રાર્થના કરતા હશે કે પ્રભુ આ મારા પરિવારની પ્રાર્થના તો હશે પણ મારા જે ઇમેજમાં રહેલા તમામ શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ એની માટે પણ પ્રાર્થના કરું છું કે એનું પણ શુભ થાવ. માટે આજે આવા પ્રિન્સિપાલો અને આવા સંચાલકો મહેન્દ્રભાઈ જેવા કે જેનો આત્મા શિક્ષકનો છે, જે મહેન્દ્રભાઈને રાષ્ટ્રપતિએ એવોર્ડ આપ્યા છે શિક્ષણ જગતની માટે, આવા સંચાલક શ્રીઓ છે. અને આવો જ્યારે તમારો સ્ટાફ, આવો જ્યારે તમારા શિક્ષકો અને પ્રિન્સિપાલ આદિનો સ્ટાફ છે ત્યારે દરેક સાચા અર્થના કે કર્મ નહીં
કરવી નહીં, પણ તમે કર્મયોગીઓ છો ને સાચા અર્થે કર્મયોગીઓ બની આજે નવા ભારતની અંદર આપણું અને આપણા વિદ્યાર્થીઓ એને મહારાષ્ટ્રના ભક્તો બનાવી અને એવું નવ નિર્માણ કરી અને રાષ્ટ્રની સેવા કરે એવા ઉમદા આપણા સર્વ વિદ્યાર્થીઓ બને એ આજે શિક્ષક દિનની અંદર સર્વને શુભેચ્છાઓ શુભકામનાઓ સાથે સાથે સર્વ શિક્ષક ભાઈઓને સંચાલકશ્રીઓને અને વિદ્યાર્થીઓને વાલીઓને કહું કે અત્યારે જે કોરોનાની આ મહામારી ચાલી રહી છે ત્યારે જે સરકારની ગાઈડલાઈન છે એ પ્રમાણે દૂરી બનાવીને રાખજો, પણ એ દૂરીની અંદર પણ ઓનલાઈનના માધ્યમે આપણા બાળકો એના અભ્યાસો આદિ કરાવડાવજો અને અમે પણ પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ કે આપ અને આપના બાળકોના સ્વાસ્થ્ય ખૂબ સારા રહે અને કોઈના ઘર સુધી કોરોના આવે નહીં, કોઈના જીવનની અંદર કોરોના સ્પર્શે નહીં એવી પ્રભુની પાસે પ્રાર્થના કરી અને સર્વને અમારા વતી જય સ્વામિનારાયણ, જય ભારત, વંદે માતરમ. Thank you very much, sir, for your precious words and blessings. Jai Swaminarayan. Yes. आप जा रहे हैं ना मंदिर इस बार? जैसे हम लोगों ने देखा कि हमें स्वामी जी ने आशीर्वचन दिए हैं, इसी के बाद हम अब नेक्स्ट सेशन जो लेने वाले हैं, हमारे रिस्पेक्टेड प्रीति मैम पेरेंट्स से लाइव वीडियो कॉलिंग पर बात करने वाले हैं. जैसे लाइव व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, वैसे ही कुछ पेरेंट्स लाइव हमारे साथ वीडियो कॉल पर कनेक्ट होने वाले हैं. लेट्स हैव अ लुक. Good morning, sir. Well, in the beginning, I would like to introduce. He is Mr. Jigar Bhai Mehta, father of Yashish, who is the student of 10th standard. Good morning, sir. Well, it's like that. My very first question, we connected with each other to share some of the views of others. First of all, I would like to ask you, sir, as your child Yashish, from the beginning he is in image and we are very close with him. We know that whenever he is facing a little bit of problem, straightforward he used to come and share the things with us. So, sir, I would like to know that as he is the board student, he is in standard 10, isn't it? And the scenario started in such a way that as soon as the students got promotion in standard 10 board exams, no regular education, no studies, nothing. So, how you face, how you come out of this phase, what is your position during this time of period, sir? Please share with us. कैसा लगा सर आपको ऐसे माहौल में जब कोई स्कूल नहीं, टीचर नहीं, सब कुछ ऑनलाइन, एक बोर्ड के फादर होने, बोर्ड के स्टूडेंट के फादर होने के नाते? डिफिकल्ट तो लग ही रहा है हमको, मगर हमारा फैमिली का जो एकदम लाइट है कि ऐसा नहीं है कि बर्डन देना है कि भाई नहीं ये परसेंटेज लाना है, ये है वो है, और यूज टू कर दिया है. क्योंकि लॉकडाउन के अंदर भी मेरा भी ऑफिस चालू था, नॉट अ सिंगल डे आई एम एट होम. 100% में ऑफिस नहीं था और कभी कभी रात को 10 साढ़े 10 बजे ऑफिस से निकलता. उसको ये पता है कि किस तरह से काम किया जाता है या किस तरह से पढ़ना है. उसको जो भी चीज़ें चाहिए थी ये भी ऑनलाइन के लिए या लैपटॉप पे वो सब अवेलेबल है भगवान की मेहरबानी से. वो अच्छी तरह से कर रहे हैं. और एक चीज़ मैंने सिखाई है कि मेरे पास तो अभी ये है, तो जो आएगा वो सीख रहा है. शायद तो अभी क्लास में बैठा है या यहाँ पे घर पे बैठा है. मतलब टीचर्स की देख लो, टीचर्स ये सबसे यूज टू नहीं है ऑनलाइन सीखना. और किस तरह से सिखाना ऑनलाइन, अभी सामने स्टूडेंट बैठे नहीं है और बोलना है तो क्या समझ रहे हैं स्टूडेंट, क्या नहीं समझ रहे हैं, किस तरह से बिहेव करना है, क्या है वो है, अपने घर का सब देखना है, वो भी तो सोच. उसके बाद में तो ऐसा सोच रहे कि भाई नहीं मुझे आता है नहीं आता है, वो इसीलिए वो अभी एकदम कॉन्सेंट्रेट कर रहा है अपने स्टडी पे वो सब. और जो आपके वहाँ से जो नोट्स आती है वो सब वो सेव कर लेता है सब. और जो भी है वो मुझे जो स्कैन कॉपी होता है उसका मैं प्रिंट आउट भी उसे ले रहा हूँ, तो वो उसका भी
तो अच्छा है कि ऐसा नहीं है कि बहुत बर्डन है या लॉकडाउन के अंदर भी स्कूल नहीं जा रहे हैं तो बहुत ही खराब कंडीशन है उसकी, वो यूज टू है, प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, नेक्स्ट थिंग लाइक दैट, आप सर 10 साल बाद मीन्स आपने ऑलरेडी कहा कि आप बहुत बर्डन नहीं दे रहे हैं यशस को, अंडरस्टूड, फिर भी सर एक फादर होने के नाते आप 10 साल बाद क्या क्या विजन है आपका यशस के बारे में? ओके फाइन सर, अभी यशस का जो भी डेवलपमेंट है आप क्या कहना चाहेंगे, उसमें इमेज का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है? यशस का जो भी प्रोग्रेस है दैट यू आर क्वाइट सेटिस्फाइड द वे इन विच इज वर्किंग, और मैंने आपको कहा कि यशस शुरू से फ्रॉम द बिगनिंग आई थिंक फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टडी विथ मी, तो सर आपको क्या लगता है यशस का जैसा भी प्रोग्रेस रहा है उसमें इमेज का कितना कंट्रीब्यूशन है, क्या कंट्रीब्यूशन रहा सर आपकी तरफ से? मैडम ऐसे तो मैं बताने जाऊँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने नोट डाउन भी किया हुआ है, फ्रॉम योगी मैम, कंचन मैम, नीता मैम, अश्वती मैम, सुधा सर, संदीप सर, रूपल मैम, एंड ऑब्वियसली आप और उन सभी का सपोर्ट रहा है पहले से, कि कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे जैसे को कोई भी प्रॉब्लम हुआ है और किसी ने सॉर्ट आउट ना किया हो, बहुत सारी मिस्टेक्स भी की होगी या उसका पहले से टॉकेटिव नेचर रहा है, तो जो भी मिसबिहेव भी किया है तो मैं जब भी आता था उसका रिजल्ट लेने के लिए थैंक यू, तो मैं बहुत सारी कंप्लेंट्स लेके आता था कि जैसे ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, और मैं ऐसा सोच रहा था कि आके मैं आप लोगों को बताओ कि आप कुछ ऐसा सिखाओ कि वो घर में ऐसा ना करे, और जैसे ही मैं स्कूल में एंटर होता था तो आपके जो पीयून्स होते थे वो पीयून्स लोग मुझे बोल रहे थे कि आप पेड़ा लेके नहीं आए, आप आइसक्रीम लेके नहीं आए, तो तब मुझे पता चल जाता था कि वो फर्स्ट ही है। जब मैडम को मिलता था तो वो ऐसे ही बता रहे थे, मैं कंप्लेंट कर दिया उसके पहले वो मुझे कंप्लेंट कर देते थे कि ये ऐसा है वैसा है, और बाद में ऐसा बोल देते थे कि बहुत ही अच्छा लगता है, मेरे लिए फाइन सर, लॉट ऑफ ब्लेसिंग। हाँ यस सर। और आपका भी मैंने देखा हुआ है कि जब पियानो के हारमोनियम प्लेइंग करने का था लास्ट ईयर नवरात्रि में, तो अगले दिन रात को मैंने आपको 10 बजे भी फ़ोन किया था और आपके साथ चैटिंग भी किया वो सब, और दूसरे दिन सुबह 7 बजे वो किया, हारमोनियम प्लेइंग किया उसने वो, और आपका भी बहुत सपोर्ट रहा है, आपने भी पता है कि भी रैंक स्टूडेंट है तो 10th फर्स्ट आ भी सकता है, तो हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है। गिरजू मैडम ने कि आप कुछ भी ध्यान मत दो, सिर्फ आपकी पढ़ाई पे और आपकी टैक्स पे ध्यान दो, और कोई भी नहीं होगा तो चलेगा, हम सब आपके साथ हैं, कभी भी ज़रूरत पड़े, और आपके स्कूल में से सभी मैडम या सर से जो भी है सभी का तहे दिल से मैं आभार मानता हूँ कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है और आगे भी मिलता रहे, ऐसी मेरी ख्वाहिश है। और आपको भी टीचर्स डे के लिए खूब खूब मुबारक हो आप सभी को। Well, thank you very much, sir. On behalf of Image Parivar, lots of best blessings to Yashish, and obviously he's going to do the best. Thank you very much, sir. So guys, you can see that parents are not 100% but more than 100%. They are well satisfied with Image staff, Image Parivar and Image Institute. Not this much. Another parent also we will take on the live video chat. So let us connect with the another parent. Let's have a look. के पेरेंट्स को
I would like to introduce him. He is Mr. Hemant Gojar, father of Dhwani, and Dhwani is one of the brilliant students of Image, and she is at present in 12th in general stream. She is in commerce. Well, Hemant sir, I would like to ask you, ध्वनि का भी ऐसा ही है कि ध्वनि शुरू से हमारे साथ रही है, बहुत सीरियस काइंड ऑफ गर्ल है, नॉटीनेस मैंने देखा नहीं है, ऑब्वियसली क्लास में रहती होगी. सर, आपका इमेज के साथ का अभी तक का जो भी समय रहा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? ऑडियो थोड़ा प्रॉब्लम है सर, ऑडियो ड्यूरिंग लॉकडाउन या फ्रॉम बिगिनिंग? फ्रॉम बिगिनिंग, ऑब्वियसली बोथ द थिंग्स यू कैन, आप दोनों बात बता सकते हैं सर. ड्यूरिंग बिगिनिंग कैसा रहा, लॉकडाउन में कैसा रहा? हेलो. यस सर, सुन रहे हैं सर हम आपको, बोलिए. हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर, यस सर. मतलब ड्यूरिंग लॉकडाउन के दौरान ओके. तो फर्स्ट ऑफ जब ये कोरोना महामारी शुरू हुआ और एजुकेशन फील्ड जब इससे इम्पैक्ट हुआ तो हमको सबसे बड़ा टेंशन हो गया था. 12th बोर्ड का मतलब करियर का ग्रोथ का मेन ईयर था, और उसमें ये स्कूल और जो जब बंद है तो उसमें इनका कितना इफेक्ट होगा, किस तरह से आगे सब बढ़ेगा. सुन रहे हैं मैडम? हाँ, सुनाई दे रहा है सर. तो वो बहुत टेंशन था हम लोगों को, लेकिन बाद में इमेज स्कूल का जो बाद में आपके स्कूल की ओर से जैसे आपका मैनेजमेंट, आप प्रिंसिपल और टीचर्स किया, और उसकी वजह से बहुत अच्छा रिजल्ट हमने को देखने को मिल रहा है. इवन वीकली टेस्ट हुए, उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं. और हमारा जो डाउट था इनकी मेन ईयर में कि खराब नहीं हो, इनका डिस्टर्ब नहीं हुआ, इनका वर्ष नहीं जा रहे, वो एकदम पॉजिटिव हो गया. तो बहुत अच्छा डेडिकेटेड वर्क आप लोगों ने किया है ड्यूरिंग ऑनलाइन एजुकेशन प्रोसेस जो 3 महीने से चल रहा है, और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिला. थैंक यू ऑल ऑफ यू वंस अगेन एंड हैप्पी टीचर्स डे ऑल ऑफ यू. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. And let me introduce you. Yourself, त्रिवेदी अवनी जी. ये प्रथम की मम्मा है. प्रथम जो कि हमारी मेन स्कूल में स्टैंडर्ड 5th में पढ़ रहा है, ठीक है मैम. मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी लॉकडाउन के ड्यूरिंग जब हम आपको वीडियो कॉल्स भेज रहे हैं, असाइनमेंट भेज रहे हैं, सो बेसिकली हम लोग तो प्रॉब्लम फेस ही कर रहे हैं ना. वी आर अपडेटिंग आवरसेल्फ, टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, आपको भेज रहे हैं. मैम, आपके लेवल पर आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई, या फिर आप कंफर्टेबल हो, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? कंफर्टेबल जैसे मान लो कि जैसे लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में पहला टेंशन था कि बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे. और जैसे मान लो कि ऑनलाइन चालू हुआ तो बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं, पर अभी क्या है कि जैसे ये 5th स्टैंडर्ड में है, तो यानी मोबाइल का यूज तो करते हैं, साइड में जैसे कुछ भी गेम है कि जो भी है वो भी लेके बैठ जाते हैं. खाली माइनस पॉइंट वही है, बाकी जैसे अपने पास में बैठे हैं तो बच्चे ऑब्वियसली पढ़ाई तो करेंगे ही करेंगे. हाँ मैम, जो आप बात आपने की उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स आके हमें ऐसे कहते हैं कि मैम आप इसको बोलिए ना, ये हमारी बात नहीं मानता. तो आप वही मिस कर रहे हो, है ना. कि और मैंने थोड़ी देर पहले ये बात कही आपको कि अभी आप हमारा रोल भी आप ही परफॉर्म कर रहे हो मैम. आपको टीचर बनना है वहाँ पर, है ना. थोड़ी बस वही रोल प्ले हो रहा है कि जैसे टीचर बन के बाजू में बैठे हैं और वीडियो दिखा रहे, बच्चे पढ़ रहे. यानी एक प्लस पॉइंट तो है कि जैसे पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, तो यानी उसके माइंड में मूड आया क्या है कि जैसे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, ये स्कूल का होमवर्क है तो करना ही पड़ेगा. वो एक प्लस पॉइंट है. अवनी जी, आपका बच्चा इमेज में कब से पढ़ रहा है? प्रथम नर्सरी से पढ़ रहा है. अवनी जी, यदि मैं आपसे कहूँ कि आप इमेज को 10 आउट ऑफ मार्क्स देना चाहें तो कितने मार्क्स देंगे मैम आप? 9. Oh, so nice of you. Thank you very much. आपका फीडबैक is the way for our motivation. Double capacity, double enthusiasm के साथ will work out for the child. Lot of blessings to Pratham. Thank you very much, ma'am. Thank you.
Thank you. You can see that not only 10th and 12th students but also primary students, all the kind of parents. हमारी इमेज इंग्लिश स्कूल जो है वो नर्सरी से 12th तक है और सभी पेरेंट्स अपने व्यूज दे रहे हैं. Let us have a look for the next parents view. Welcome, ma'am, in the life of Image. Thank you, teacher. I would like to introduce you yourself, Mrs. Bhavna Rathod. आपके बच्चे का नाम है श्लोक, है ना भावना जी? भावना जी, आपका बच्चा कब से इमेज में पढ़ रहा है? 5 साल हो गए मैम. आपका बच्चा नर्सरी फर्स्ट स्टैंडर्ड से यहाँ पर आया था और अब 5th में आ गया है ना मैम? जो भी चेंजेस बीइंग द मदर आपने नोट किया श्लोक में, मैम उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? टीचर्स का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है? अच्छा है कि टीचर पढ़ाते हैं अच्छी तरह से, होता है. मैम आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप इमेज से रिलेटेड शेयर करना चाहेंगे मेरे ऑडियंस के साथ? कोई पर्टिकुलर चीज जो आपको दिल को छू गई इमेज के स्टाफ की वजह से, कोई ऐसा इंसिडेंट? कोई भी प्रॉब्लम हो अगर आते हैं तो टीचर सुनते हैं, समझाते हैं, बच्चे को सिखाते हैं, वो सिस्टम सॉल्व हो जाता है. ओके फाइन. आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप आए और आपको मना कर दिया हम लोग बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ. हमेशा टीचर. यस मैम. यस मैम, बोलिए क्या बोले थे आप? गुड टीचर्स. हाँ, गुड टीचर्स. एज गुड पेरेंट्स आर देयर, दैट्स ए गुड टीचर्स, है ना? ताली दोनों हाथ से बजती है. गुड पेरेंट्स इसलिए हम गुड टीचर्स हैं, है ना मैम? ठीक है मैम. अभी श्लोक जब हमारा ऑनलाइन स्टडीज चल रहा है तो आपको क्या लगता है मैम? यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम हो या फिर कंफर्टेबल हो? ऐसे जैसे स्कूल में आके क्लास में पढ़ते हैं उतना अट्रैक्टिव नहीं हो पाएगा घर पे, पर अच्छा है कि घर पे नहीं बैठे रहे, उससे ऑनलाइन पढ़ाई चालू है, वो अच्छी बात है. और वो भी सीख पाते हैं. अभी तक हमने मैम 2 यूनिट टेस्ट लिया है. अभी फर्स्ट टर्मिनल रिसेंटली हमने अरेंज किया था ना मैम? श्लोक ने सारे एग्जाम्स अटेम्प्ट किए हैं मैम? हाँ, सारे एग्जाम्स अटेम्प्ट किए हैं. और उसमें भी कंफर्टेबल रहा आपको एग्जाम्स देने का एक्सपीरियंस? ऑनलाइन एग्जाम थे मैम. ऑनलाइन एग्जाम्स आजकल बड़े लेवल पे, कॉलेज लेवल पर या फिर जॉब करना हो ना तब हमें ऑनलाइन एग्जाम्स या इंटरव्यू देने होते हैं. उसकी जगह हमारे फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे, हमारे 5th स्टैंडर्ड के बच्चे, दे आर अपीयरिंग ऑनलाइन एग्जाम्स. तो कैसा रहा मैम ये एक्सपीरियंस? अच्छा एक्सपीरियंस तो कर पाते हैं, कर लेते हैं बच्चे भी. फाइन. बस बच्चे अभी से बड़े हो गए, मैच्योर हो गए ना मैम टाइम से पहले. थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर टाइम. लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स टू श्लोक. थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू वेरी मच. Sir is showing you the decoration which we have done for the 5th September celebration. You all can find chalk, duster, pen, pencil and books because this is the life of a teacher. This is the life of a student as well because a student is always playing, watching and is completing the education with this chalk, duster, blackboard, this books, pen and pencil.
let's have a look for the next parent with whom we are going to be on a video call and we are going to take their views. आपने देखा कि कई इमेज के पेरेंट्स जो प्रेजेंटली बच्चे अभी इमेज में पढ़ रहे हैं उन्हीं के पेरेंट्स ने अपने रिव्यूज दिए हैं एंड नेक्स्ट पेरेंट के साथ अब मैडम कनेक्ट होंगे. लेट्स हैव अ लुक. Good morning. Fine. यादव. Good morning. Good morning, मैम. यादव संगीता जी. यादव हमारे साथ. हाँ जी मैम. इनके बच्चे का नाम सलोनी है जो स्टैंडर्ड 10th में पढ़ रही है. ठीक है ना मैम? फाइन. मैम कब से आपकी बच्ची इमेज में पढ़ रही है? 2 बच्चे हैं. 2 बच्चे हैं मैम. ओके. सेकंड. मेरे बच्चे 10 साल से. 10 साल से. सेकंड बच्चे के बारे में आप रिव्यू दीजिए मैम. कौन सी क्लास में है? 5th A में है. 5th A में पढ़ रहा है. उनका क्या नाम है मैम? यादव कृष्णा. यादव कृष्णा. फाइन. हाउ कुड वी फॉरगेट है ना सलोनी एंड कृष्णा. क्योंकि अब कृष्णा की कंप्लेंट है तो सलोनी के पास, सलोनी की कंप्लेंट है तो कृष्णा के पास. इज दैट इट मैम? ओके फाइन. मैम अभी सलोनी 10th स्टैंडर्ड में है, बोर्ड एग्जाम्स में है. कैसा सपोर्ट है मैम अभी आपको इमेज की तरफ से? बच्चा बोर्ड में है, क्या आप टेंशन में हो या आप रिलैक्स्ड हो? नहीं, ऐसा तो कोई टेंशन नहीं क्योंकि टीचर बहुत सपोर्टेड है. अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अगर नेट से नहीं हो पाता तो कॉल करके भी अगर कुछ डिटेल लेने वो लोग सामने से हमको देते हैं. इसलिए नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके मैम. मैम जैसे कि हम लोग हमेशा भी लाइव शो जा रहा है, इसके अलावा भी रेगुलर टाइम पीरियड में हम लोग को सिर्फ स्टडीज़ को नहीं बल्कि दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, एनुअल फंक्शंस हैं, फन पेड़ो है हमने अरेंज किया था. मैम आप इमेज इंग्लिश स्कूल की एक्टिविटीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्टिविटीज बहुत अच्छी है. अभी हाल में से टीचर्स डे है तो मेरी छोटी बेटी के लिए आया था कि वो टीचर्स बनने के लिए यानी वो है कि नहीं. मैंने बोला कोई बात नहीं, पार्टिसिपेट करेगी तो उसने पार्टिसिपेट किया है. टीचर्स डे के लिए टीचर बनी है वो फॉर डे की. वेरी गुड. और आपको लगता है मैम ये एक्टिविटीज़ में पार्ट लेके कहीं ना कहीं आपके बच्चे का भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहीं ना कहीं वो निखर कर आते हैं बाहर? हाँ बहुत बहुत अच्छा है. यानी आप लोग नए नए इवेंट करते हो, बहुत ही अच्छा है. बच्चे जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं थोड़ा नॉलेज भी होता है. वेरी गुड मैम. मैम अगर आपको इमेज को 10 में से पॉइंट्स देने हो तो आप कितने पॉइंट्स देंगे मैम? मैं इसको 10 out of 10 दूंगी. Thank you very much. Thank you for your precious time. Lot of blessings to Saloni and Krishna. Thank you very much. Thank you. So all my dear viewers, my dear parents, my dear students and all the staff members who are watching right now on Thank You Teachers, that means the Teachers Day live celebration on Facebook page of Image English School. सभी व्यूवर्स, सभी पेरेंट्स, टीचर्स, स्टाफ मेंबर्स जो फिलहाल मुझे और हमारे इस सेलिब्रेशन को लाइव देख रहे हैं, सबसे पहले मैं शिवानी मैम आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड सपोर्ट. आज आपने देखा कि हमने हमारे गुरु, हमारे इमेज परिवार के पायनियर्स की ब्लेसिंग्स ली. हमने लाइव वीडियो कॉल किए. हमारे परम पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद और आशीर्वचन हमें मिला. हमारे स्टूडेंट्स, प्रीवियस स्टूडेंट्स ने स्पीच दी. सभी टीचर्स ने अपना इमेंस कंट्रीब्यूशन दिया है. इसीलिए सभी पेरेंट्स ने अपने रिव्यूज हमारे साथ शेयर किए. आप हर लाइव में हमें सपोर्ट करते हैं. एज पर माय लाइव ट्रेडिशन, वी विल शेयर दिस लाइव ऑन आवर फेसबुक पेज. We will also reshare this page on our Image English Medium Schools account. And after that, you will share this live, promise me. And we will end our live with our national tradition, our national anthem. Let's be ready for the national anthem and then we will end the live session. विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे
We as a teachers, we are going to reshare the live session. So as a parent, as a student, you have to also share this live on your Facebook page, your status of WhatsApp, Instagram status. So be connected with us. Lots of love, lots of blessing. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Jai Garvi Gujarat. Thank you so much.